delivers a primetime speech as optimism grows over a potential end to his war in Iran. Nike's cellulose retailer issued a surprisingly gloomy outlook for the year ahead, citing global headwinds. Plus, OpenAI raises $122 billion in its largest funding round yet, pushing its valuation to $852 billion in total. I have another piece of breaking news just crossing now on some other tech movers. I want to show you what Intel and Apollo are doing because this is actually a deal that I told you all about in 2024. Today in Intel, we're going to do this giant JV to invest in a data center and hire. All right. सर आज मार्केट से ही रॉकी रहेगी audio check please if I can get an audio check online hotspot Okay, do you have a hotspot? You don't? Okay. There's another way. Give me your mouse. audio is fine thank you very much good All right, good morning, everybody. Wednesday, April 1st, 9:04 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Thank you for coming in person as well as online. Let's get started. I'm your host, Rafay, and I'll be with you for the next few hours to help understand the market, analyze it. And right at the opening, Iran has said this news was fake that yesterday there was the market is dumping right now. It has started from 24,200 to down to 24,000. So Iran says there was no negotiation. Not our president said nothing. So yesterday they manufactured the news, they put it out there just to bring the market up. A lot of people who put their stop losses or whatever, so they're now deliberately moving the market and it is becoming a little annoying. So always be ready. And today's, if we look at the news, and if you will see that you're starting 8:15 all the way down to 9 p.m., you got quite a bit of red news.
So 10 o'clock will stay away, and also 9 p.m. in the evening. Let's see what Mr. Trump has to say. Oil price went up and went down, and we're back to $101. So oil is going up, Nasdaq ES is going down, right? So that's how. So it has been a crazy. Yesterday at 2 p.m. approximately, or before that, price was okay at 6,500. And the news comes out, the deals are done, and it shoots up 200 points. So it is just insane how these. We don't care, green to buy, red to sell. That's fine, but just be very careful. So anything I say here for the next 3-4 hours is not financial advice, just for informational, educational, entertainment purposes only. And if you looked at night areas, everybody has access to it. The area said if ES got inside the 23 zone, just sell. I did sell. So I had my orders set as 6623. And I woke up today with how much profit? $120 profit on a couple of micros, and that's about it, right? So evening areas, both your Nasdaq got missed by almost what do you call it? Didn't get missed actually. It broke, and so right in between the 200 to 300, it went as high as 250, 246. So our evening areas were respected last night. They start to come online around 9 p.m. So every morning you have morning areas, and then after 9 p.m. you have evening areas. So you can keep an eye on them that can act like a support and resistance. So what I do normally in the evening, couple of micros I would go long, couple of micros I will go short. With OCO order with 2 limits and 2 ATMs. And so last night, our area said 6623, and it went as high as 6643. But from 23, it did give us some point, by the way. Anyway, so we'll see how price goes. If I want to go long, you gotta go below pivot. So I'll tell you some long numbers on ES shortly and Nasdaq shortly. But yesterday's swing is now giving us a retrace because in one night it moved 1,200 points and in 24 hours, and then ES moved almost 250 points. So this is Insanity Ultra Pro Max. So anyway. सर आपका वो हॉटस्पॉट से ही होगा लॉगिन फेल्ड का मतलब ट्राई कर लें अभी So let me start writing some areas, highs, lows, some numbers, so we know what could be our support and resistance. और वैस भाई क्या नंबर उठाना है पीपी से मैं नहीं पीपी ले रहा आज हॉटस्पॉट लगाएं क्योंकि वो आपके इनफ यूजर्स कनेक्ट हो गए हैं So the numbers are again today ADP, non-farm, and Mr. Trump. Pressure is up, base is up, but pressure is down. Our 23,490 becomes the trend change. So our last night's high is 24,250. So that became the high, and 23,880 is the low. 23,000. Good morning.
Grab a seat anywhere. So $370 move. ES, we have the high of 66.44, you can say, and the low 65.61. हेलो जी सर। सर मेरे पास सुपर एरिया एक्सपायर हो गया हाँ तो वो मैं डैनियल भाई को क्विकली टेक्स्ट कर दे मैं तो वो हाँ वो कर दे तो जस्ट आस्क यू कैन आई सिट ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम because once he comes he checks normally so no worries बस आपको एरियाज नहीं नजर आएंगे स्क्रीन पे प्रिंटेड so सर मेरे साथ भी वही ना बार बार कैप्चा दिखा रहा है और फिर लॉग इन फेल्ड इसलिए आ रहा है because it's just not letting it. Lots of volatility. Be very careful. Even yesterday we were sitting here at 6,500 and we did it and they posted on that deal is being so they're manipulating the market as pretty aggressively, you can say. Because it's trader weight, that's where the issue is coming. Try logging in trader weight first. It is logged in trader weight. It is? Okay. Yeah. Okay. Bypassing the captcha is no problem for me. It's just the trader weight is always giving me issue. जी वालेकुम सलाम So Iranian parliament, the strait will not open. We have held no negotiation. So incredible, simply incredible. First pullback kind of gave us a little bit of points. Oh, sir, मजा मजा आ रहा मजा Do you have a hotspot? Open your hotspot.
Good morning. So our first pullback has worked. It's giving us a couple of points there. So R2 could act like a good resistance. So somewhere around 50 zone, 66.50, we can take a couple of trades there. हाँ वो रात का था, वो रात का नाइट हाई है, तो अभी मॉर्निंग में जो एरिया आए हैं ना, so R2, I'm skipping R1, but I'm going with R2. And MNQ again, yeah, MNQ R2 as well. So both markets, I'm personally taking R2. The night high and R2 should work good. And then, of course, along the trend, along the way, you want to take mid bands to go up and down, no problem. No, not morning. Hello, Ji. Kya chal hai? 5 minutes ago, Trump says Iran has asked for ceasefire. Like, come on, man. अब पता नहीं किसके ऊपर यकीन करें अब मार्केट ऊपर चढ़ने लग गई है. It is. I'm not even sure what to believe anymore. Volatility now again. We feel like a tennis, like this side, that side. So 8:20, Iran said no. At 8:50, Trump said yes. So just enjoy the ride, you know. And we're back up to that zone. I'm not even sure which news to.
आके चला बाइक क्यों करना आके रेड में से हो गए 2 पॉइंट आपके रेड में से सेल करना जी बाय नहीं करना So it's going to open officially in about what, 8 minutes. Let's see. मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा ना क्योंकि वो ट्रेडर वेट जैम हो रहा है ना connection let's see same problem same अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपको कसिनो से बाहर कर देते हैं ना कि मुझे कसिनो में दोबारा ही ना आने देना तो जो लोग ओवर ट्रेड कर जाते हैं वो बटन बना दिया उन्होंने उस पर क्लिक करेंगे तो शाम 5 बजे तक लॉक हो जाएंगे फिर अगले दिन आने देंगे अगले दिन हाँ तो वो लॉक सिर्फ आपके हाथ बांध देते हैं क्योंकि कल यही हुआ है 9 से 11 अच्छे खासे पैसे बन गए कुछ लोग उधर से उठ के इधर आए ट्रम्प की ट्वीट में सारे वापस कर दिए तो ऐसे ही होता है ओवर ट्रेड हो जाता है फिर बंदे के ये ना हो कि आपके पास ऐसी रेडी हो कि जहाँ पर थोड़ी स्लो पाए वहाँ रेडी उतर जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको चलो जी फिर दोबारा वो कुछ कह रहे ने वो कुछ कह रहे ने ईरान वर्सेस ट्रम्प so stay attentive today same problem hotspot से करें गुड मॉर्निंग भाईजान क्या हाल चाल let me see अब शायद हो जाए as the queue is getting clear no not yet
लेकिन हॉटस्पॉट पे होना नहीं चाहिए क्योंकि हॉटस्पॉट आपका अपना आईपी होता है। हॉटस्पॉट से नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज उधर जो है लेट्स से 20 plus 10 plus 5, 30 people trying to log in same time. The other problem is if one guy fails to connect, Yes. because it's under the same IP, right? Yes. It affects everybody. If one guy fails to connect. That's the issue. That's why I try to do as much on the hotspot as possible. Some companies don't like Wi-Fi hotspot, especially Rogers for me. So I have to connect my cable, and I do hotspot over cable ke saath. So, all right, 3 minutes before, but don't worry, too strict. Both opportunity आएगी जी आज तो. It's not a कुछ नहीं होता. So I'm keeping an eye on R2 today. So this is the, by the way, Thursday we're open tomorrow, but Friday nobody's here. So just saying, market is going to close early at 11 o'clock and it will open again on Sunday at 5. So Monday हम लोग इधर हैं, लेकिन Friday को यहाँ कोई नहीं है. फिर आप लोग आओगे. So listening online, anything, just saying that मंडे को खुला है, बैक टू नॉर्मल. सिर्फ फ्राइडे को गुड फ्राइडे के हिसाब से. तो टुडे इज वेंसडे ऑन अप्रैल फूल ही कर दिया कल हमें उसने, ट्रम्प साहब ने. एंड टुडे इज अप्रैल एंड देन R2. we'll keep an eye on R2. कल आपने बताया नहीं, उधर से प्रॉफिट बना के आई थी नेक्स्ट रूम से. वो तो मैंने ऐसे लगाई, मैंने कहा ये लगा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, ये पता होता मैं कभी ट्रेड ना करने देता कि बन के आया हो. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. The R2 for areas R2 and the pullback has gone up. So अभी देखते हैं कहाँ जाती है. अभी ट्रम्प ने कहा है कि वो नेगोशिएशन हो रही है. सुबह नहीं हो रही थी, अभी 5 मिनट बाद हो रही है. So the deals, which company is running a deal? Apex is running 90% off and Bullnox is running 90% off. These two companies are running the deal. So stick to micros if you have PA and bus. All right, market is officially open. Let's see now which way it wants to go. Maybe base is up, so maybe night session high. So we'll keep an eye on night session high.
Rafay, I'm able to bypass the captcha, but the problem is people they take profit. They won't. It's not only take profit; it's trade of it. It's straight away. They So it's every company uses same. He's fine with rhythmic. He can use rhythmic, no that's problem. why I was wondering. Too. So for him, no issues. It's the issue is mostly because Ninja and Trade of It is one company, one IP, maybe three people, but 30 will never. We're coming back in R1 very soon. Very soon we're hitting R1. Good morning जी. Grab a seat anywhere जी and hotspot से connect हो जाए. R1 is officially done. One time has given us from like if you got into 2019, it's done, but I did not take R1. I'm waiting for R2. तो आपने सही किया नहीं यार वो तो रुक ही नहीं रही थी वो चलते सब कल की याद मत दिला हालांकि इनका उस रूम से डन हो के आए ओवर ट्रेड हो गया पहले तो सर बता रहे सिम में लगाई थी ध्यान ही नहीं था कि वो दूसरी साइड में वो चालू है उस ट्रम्प को वो देना ही है सिर्फ मसला ये कि इज इट रियल न्यूज़ और फेक ये प्रॉब्लम है ना कि लाइक इट्स so price did respect our one quite a bit 30-20 mid-band gave us 2 points so far so 30-20 mid-band gave us some points gone to retest it. Let's see if it breaks.
Divergence on 30-20. This midband could be tricky because you have two higher highs, but you don't, strength hasn't gone up. Another midband. So personally, I'm waiting to sell from R2, night session high. If price goes to my R2, I will sell from there. So NASDAQ, I'm waiting again somewhere around 250 zone, and ES again, R2 zone. But then this is the first time trend will change to the magenta. First time.
coming down fast. So let's see if this first pullback works. नहीं नहीं, एक रेड का भी नहीं हुआ, मैजेंटा का नहीं हुआ, बहुत तेजी से आ रही है. जिस स्पीड से गई थी उसी से वापस आ गई. हाँ, वैस भाई हंस रहे हैं कि कहाँ से ट्रेड लें. प्राइस ड्रॉप कर सकती है, प्राइस ड्रॉप कर सकती है, किसी को तोड़ भी सकती है. So, these are not normal times, just saying. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है वन मोमेंट में. लेट्स सी. ईएस में थोड़ा सा आया था, एमईएस में somewhere around 942. अब 30-20 mid band and 15-10 mid band falling very close to each other. अगर सेल करना ही है तो वहां से कर लें. आई एम गोइंग टू टेक, इफ आई वर टू टेक इट, आई विल टेक 30-20 मिड बैंड, 15-10 को पैसे, क्योंकि वो स्विंग बहुत बड़ी है. तो इस वजह से जब अगर रिस्क ही लेना है तो 30-20 के मिड बैंड पे ले लूंगा ना, अगर ऑलरेडी आप लोग डन नहीं हो गए तो. डिपेंड करता है. हाँ, लेट्स सी. ओके, देखते हैं. एक पॉइंट ले लिया, डन. हाँ, 5 लॉट से 1 पॉइंट ले रहे हैं. ओके. So the red box is coming somewhere around 22. Too fast, way too fast. नहीं, रेड बॉक्स बनता है ना. थोड़ा सा रुक जाए, मुझे 30-20 का मिड बैंड चेक कर लेने दें. 30-20 मिड बैंड is done, and at the same time the first pullback on the green is done. वो भी आया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. रूल नहीं चेंज होगा. $5 stop loss and you are laughing. That's it, done. 30-20 mid band has given us couple of points. So 6609 से 6604. So when the swing becomes so big, I skip 15-10 and I go. If the अगर छोटी सी swing आ रही है और पहला pull back है, चलो 15-10 ले लो. लेकिन swing ही आप देखें, almost 22 पॉइंट की swing one way आ गई. तो मैंने सिर्फ अपना रिस्क उठा के बड़े चार्ट पे कर दिए. That's it. So still it's too fast. Wait, give it some time to think. ग्रीन बॉक्स से 2 पॉइंट मिले थे, 1 पॉइंट तो मिल ही गया था ग्रीन बॉक्स से. निंजा का पिवट देखता हूँ जी, एक सेकंड आपके लिए. निंजा का पिवट खड़ा हुआ है somewhere around S2 पे खड़ा हुआ है जी, 750
5 के करीब. If anybody wants to again sell from R2 because your red boxes on 240 charts are inside R2 for NASDAQ and ES as well. So few days ago I spoke to Mr. Daniel. He's like best to stay in short because even though market is being pumped, इतनी जल्दी जंग नहीं खत्म होनी. अभी तो उनके ट्रूप्स उतर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ क्या झगड़ा होना है. तो शॉर्ट फिर जल्दी पैसे बना देता है. 30-20 का मिड बैंड एटलीस्ट 6 पॉइंट्स दिए, बट इट्स ओके. वेट करें. न्यूज़ इज एट 10 o'clock. So what's the news? We are looking at ISM manufacturing PMI. Green to go up, red to go down. First pullback again on red worked and gave us a few points. यार देख लो ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 1500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. हाँ 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 वो ये तो ट्रेल करना करो ना. ओह सर मैं वीडियो होनी पे. Oh yes, sorry. I completely forgot on the video on how to trail. स्टॉप लॉस नहीं मिनिमम और 2 तो बार ट्रेल करेगा, 2 से पहले नहीं ट्रेल कर. ऑटो ट्रेलिंग. Yes, this is the video. Okay, I sent here. Auto. No. Trail here. Trailing. Just search. That kind of tells you. सिम पे आप 1-2 दफा प्रैक्टिस करें. Another mid band. Wait. अब ईरान ने राइट अवे मैसेज कर दिया कि अगली कि अभी आप फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के रखें ना, तो लग रहा है दोनों बच्चे लड़ रहे हैं. अब वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट वॉन्ट बी रीओपन. नहीं देखिए हम उसके इट इज इंसैनिटी टू द मैक्स. बिकॉज उस पर ट्रम्प पे मल्टीपल प्रेशर हैं. एक तो मिड टर्म के इलेक्शंस हैं, नंबर 2 ये वार की वजह से स्टॉक मार्केट 10 माह पीछे चली गई है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू अपना प्रेशर दूसरों के ऊपर डाल रहा है. हाँ कि उसने किया. आई सेड so it's all the word is called hearsay. I said, he said, कोर्ट में यही होता है ना, उसने ये कहा था. So but anyway, better to stay in trend. ऊपर जा रही है बाय करी जाएं, नीचे जा रही है सेल करी जाएं. 1 सेकेंड और आपके 2 पॉइंट आ गए फर्स्ट पुल बैक में एंड डन हो गया. आ जाते हैं ग्रीन में. अब ये आपका ट्रेंड डन हो गया. अब आप मेजेंटा का वेट करें, और अगर ट्रेल करना है तो ट्रेल करते जाएंगे.
So if you're trailing, you're done 6 points. I was predicting it would have done. हाँ कोई बात नहीं, डन हो गया जी. So the first pullback highest probability है, फिर 100% तो कुछ नहीं है, at least so far we did not have a single stop loss. अभी first pullback में कोई stop loss नहीं है. And it's shot back up again. They're crazy. हैं? 12 अगर यही ट्रेल होता है तो it's हो गया, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं. We're getting somewhere, hopefully, yes. अब वो रुक गई ना क्यू लॉग इन करने की, तो आप विन लाइफ टाइम से ट्राई कर सकते हैं. डन जी, ठीक है जी, वेरी गुड. बंद करें बस्ता, घर जाएं. तो रेडियो पे आज मैं कह सकता हूँ 9:53 पे. पहला आपका नाम थोड़ी लेना है. मेरे नजर से लगने हो ना, अपने आपके अकाउंट को लगना आप. एनीवे, नो प्रॉब्लम. आपका हो गया, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. स्लो एंड स्लो. अब रेड का वेट करें या नंबर का वेट करें ऑलमोस्ट 50 तक. So the number I'm keeping an eye for is 6650. ये है R2. Night session is 46 and I'm waiting for 50. Sell. कल की तरह हमने वहाँ सेल करना है. रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस. सेल आपका नंबर बनेगा R2. अगर सेल ही करना है ना तो R2 का वेट करें. मैं लाइव अकाउंट में भी वेट कर रहा हूँ, फंडेड में भी, एवरीथिंग. अभी दूर है, अभी करीब आएगी तो फिर जा, क्योंकि या अगर आप एरिया वाले हैं ना, जनरली आप किसी और काम पे बिजी हो जाते हैं. जी सर. हाँ जी, बस सर. हाँ ठीक है, आपका और क्या चाहिए. माइक्रो पे किया करें, लाइव अकाउंट है, खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो जाए ना. तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर ज़्यादा ट्रेड भी ले सकते हैं और एटलीस्ट आपका लॉस. अगर श्योर ट्रेड लेना ना, फिर मिनी पे जाएं कि यार यहाँ मैं 80% श्योर हूँ, 85% श्योर. नहीं, फर्स्ट पुल बैक. अब ये फर्स्ट, अब देखें ग्रीन बॉक्स में से आई है. सो उसमें भी ना मैं लोगों को कहता हूँ 2-3 माह टेस्ट के बाद बनती है अगली बार. सो हम मजेंटा में अभी बनता है पहला पुल बैक. All right, we are back in main screen पे भी ग्रीन आ रहा है कनेक्ट. अगर पहला ही पुल बैक आपको अच्छे दे गया तो आपका ट्रेड ही डन हो जाता है जी. एक सेकेंड, अभी देखा नहीं, अभी स्टॉप लॉस देखते हैं. नहीं, 5 पॉइंट्स का होता है सर. नहीं बेशक है, लेकिन स्टॉप हो गया, ट्रेड डन हो गया. Done, okay. So another first pullback gave us some points. Done हो गया जी, आपका ट्रेड डन हो गया. अब आप ग्रीन का वेट करें. तो बस जा रही है नॉर्थ साउथ. तो सिर्फ पहले पुल बैक के स्टेशन पे बैठना है, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, पहले पे. अभी 4 आउट ऑफ 4 है, ठीक है. नो, अगर आपके 4 आउट ऑफ 4 फुल ईएस में लग चुके हैं तो 10 बस्ता पैक करें, या माइक्रो पे आ जाएं या किसी और अकाउंट पे आ जाएं. 3 ऑप्शन है. जिस तरह ये डिसिप्लिन है हमारे पास. उधर भी एक लड़का था 9:35 पे आके $100 का टारगेट रखता था. इन्होंने तो फिर ज्यादा बनाया है, 100 का टारगेट रख के घर. अब ये काम वैसे कोई भी कहीं से कर सकता है दुनिया में, सामने आने की जरूरत नहीं. 9:30 पे कोई ऐसी चीज नहीं होती जो यहाँ मेरे सामने मिलेगी. 9:30 पे सिर्फ मार्केट ओपन होती है. ये काम आप 23 घंटे कर सकते हैं कि आपको लगे यार शाम को मैं खोलता हूँ अपना थोड़ा सा. ठीक है जी, गुड, कंग्रेचुलेशन. हाँ नहीं, वो हमने उसकी परवाह नहीं कर रहे. उसकी स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का, बेशक वो ग्रीन आ गया था.
अभी नहीं नहीं कैसे दे सकते हैं मिड बैंक? वेट करें, अभी हायर हाई नहीं बन रहा 20, बहुत कंसोलिडेशन शुरू हो गई है, क्योंकि एटलीस्ट उसको 30-20 को भी तो वापस ऊपर जाने दें ना फिर, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज हो ना तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से ग्रीन रेड तो आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पर अब यहाँ पैसे वापस नहीं देने हमने, ये मिड बैंड है ना, लेट्स सी डज इट गिव मी अ पॉइंट, ए 1 सेकेंड, वेट, एक पॉइंट यहाँ से भी दे गया, क्योंकि दोनों ग्रीन हो तो आपका फर्स्ट पुल बैक बाएं में है, दोनों रेड हो तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो बस बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, रेड ग्रीन, सो it should establish a trend and then establish a trend this way. So 5 out of 5 for 1 point. I am still waiting for R2 to get hit. Hello G, how are you? Same old, another day. एक swing ऊपर, एक नीचे, सही table tennis. Something is not right in the Russell areas. Russell areas ठीक नहीं है. Let me fix. नहीं, लेकिन एरिया सही नहीं है, रसल का एक्सपेक्टेड हाई ठीक नहीं लग रहा। अभी न्यूज़ भी है ना सर 10 बजे 1 मिनट में न्यूज़ है जी, प्लीज स्टे अवे, 1 o'clock नहीं। एनक्यू का एक्सपेक्टेड हाई बहुत बड़ा गैप है, तो लेट मी फिक्स एनक्यू एक्सपेक्टेड हाई। So if you refresh your area, so news 10 o'clock guys, and it is pending. Let's see which way the market wants to go. So this update was sent by me to fix your NASDAQ areas. If you refresh, expected high got fixed. Okay, news. There you go. Either that's too far or no, this is wrong. It has to be 24. Maybe this is right. It's okay. So the pending news. So it's green news, so it means price should go up. Should. And both, let's see. And if I were to sell again, I'm waiting for R2.
50. So Nasdaq needs to travel 100 points from here. That will fixed. Then we'll wait for R2. Yes, it still wants to go up. Let ES still go up, what, 20 plus 30, 30 more points approximately. So, oh, no problem. मैं कहा आपकी लैपटॉप ना टूट जाए. ट्रेड का कोई मसला नहीं है लैपटॉप. फिर कुछ कर रहे हैं ईरान ने. एक सेकंड. हाँ मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक सेकंड. बैठे बैठे फाइन. After divergence, let's see. See, this is where most impatient students will get into a trap कि ये यहाँ से नीचे जाएगी और जी आप सेल किया वो ऊपर चले गए. तो वेट, मैं अभी भी जब तक 45 से को क्रॉस नहीं करती कोई सेल ऑर्डर नहीं लगाना मैंने. 6645. Reason, again, I keep stressing it, this is an R2 number. Our night high is 46. So if it crosses there, then I will go in with maybe 1 to 2 micros depending on my account. सब न्यूज़ हो गई कि News हो गई, green news. 30-20 was a gap trade. And again, I keep saying every day, you're not comfortable with first pullback, do 30-20 mid band every trend change. 30 उसमें आपको पहला पुल बैक भी नहीं देखना, उसमें सिर्फ आपने 30-20 का ग्रीन हुआ पहला पुल बैक लें, couple of points, multiple trades. आ रहा है, देखते हैं क्या करता है. This is trade number 6 technically. One sec. Red. First stop loss. Yes, down. 5 points. Given back. Trend changing way too fast. And लेकिन ग्रीन का 2 पॉइंट दे गया. उसको फाइन ग्रीन का आया था जी. ग्रीन की जब गई ना तो नहीं टच हुआ. हाँ चला गया.
anything on MNQ? Can we do 240 से पहले कुछ नहीं, ये नंबर मैं कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हूँ 240 तक। 24 246 नाइट का हाई है, तो 240 के बाद कोई रिस्क लेंगे, उससे पहले नहीं। Which is really R2 as well. तो हमारा Nasdaq का R2 should give us something. टू फोर्टी से सेल है ना सर? 240 के बाद, मीनिंग 246 नाइट सेशन हाई है, तो 240 के बाद। This was a gap trade, by the way. Kind of mid-band missed by a tick. इस पे मिड बैंड पे लगा सकते हैं सर? एक हो गया है, होना तो चाहिए, इट शुड बी, क्योंकि उधर अभी लोअर लो बनने वाली है 30-20 पे, so that mid band should technically sell. All right, okay, इससे पहले ही वो चला गया, आया, it's too fast. Pick हुआ है, let's see, does it give you TP or SL? The market wants to go up now. Too fast move हो रही है जी। आपका ट्रेड वैसे टेक्निकली डन हो चुका है। So yes, sir, got a point. हाँ, पॉइंट मिल गया आपको। ये जिस वक्त तक आप डिसाइड कर रही थी कि मिड बैंड पे लगाऊं, वो जाके पिक होके नहीं तो बहुत तेज है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Because Nasdaq has way too much volatility at the moment. If this is a seventh one, we missed one is a stop loss so far. Got it.
थोड़ी सी फास्ट चल रही है कल क्या तो बैक एंड फोर्थ ट्यूस वो एक टू कल बंद करने के लिए क्या था आज खोलो एग्जैक्टली। और आपकी दो बड़ी न्यूज़ आई हैं सुबह, नॉन फार्म की, को रिटेल सेल ISM। सो चार तो रेड न्यूज़ हैं आज, और शाम के 9 बजे वो बोलेगा जंग के हालात हैं। इट इज़ इंसैनिटी टू द मैक्स। Too many quick trend changes. Red, green, red, green. Slowly, Nasdaq is climbing. Nasdaq is back into R1. Technically, yes. Speed तो पिक हुआ। उसको पोजीशन बंद कर दें, क्लोज कर दें पोजीशन में जाके। हो गया जी। रूल नहीं चाहिए, फास्ट हो, स्लो हो, अल्ट्रा स्लो हो, रूल वही रहेगा। दोनों के पहली दफा ग्रीन हुआ, एक 2 पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। So 8 mid bands, 1 failed, 7 okay. No, वो उसके बाद आप क्या कंटिन्यू अगले अगले ट्रेंड में ले लीजिएगा ना। क्योंकि अटैचिंग वाला कई दफ़ा नहीं स्पीड में चलता, इसलिए आई डोंट लाइक टू अटैच माय ऑर्डर, आई मैनुअली मूव इट। नहीं, वो कई दफ़ा ये इतनी ग्लिच तेज़ आता है। Come on, Nasdaq, pull up, go to R2.
All right, your expected high and extreme high on NASDAQ is fixed. If you right click, it will show you the right areas now. Reload Ninja, extreme and expected was off a little. Come on, cross 200, go to 2. If NASDAQ goes up, then ES will go to R2. $201, $202, it is starting to climb now. $209, $210. Our areas is officially from 300 to 330, but let's for R2. So you can start risking around 280, 290, but let's see if it breaks night high first before going to R2.
Was this the first pull? Yeah. No, no. That came out of nowhere. Whoa, 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 whoa. Oh. between होती है नीचे जा रही जैसे इस वक्त रेड हम लोग उस वक्त सेल कर नहीं सकते हैं नहीं नीचे? नहीं 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 जब करना तक चाहिए। मिड बैंड पे नहीं है, क्योंकि वो आपने सेल किया तो 50% चांस है ना उसने रुकी और ऑपोजिट हो गई। That's what I've been doing, so I'm losing, gaining, हाँ, losing. क्योंकि आप चलती गाड़ी में बैठ रही हैं, तो जब तक आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो उसका 50% है। आप देखें, अगर किसी ने मिड बैंड पे लगाया तो वो पहला पुल बैक बनता है। मिस बाय ठीक, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सो आपको 50% चांस है कि आपने ग्रीन पे दबाया, क्योंकि जैसे ही आप एंटर हुए वो रुक गई, या जैसे ही आपने सेल किया, तो बेटर है कि वो देखें फर्स्ट मिड बैंड पे लगाया तो वहाँ पर बैठे ना, अपनी लाइन पे बैठे कि मेरी लाइन से इधर जाएगी तो मैं बाय करूँगा, लाइन से इधर जाएगी तो सेल। इस लाइन में भी, इस ट्रेड के अंदर भी नज़र आ रहा है कि अगर वो पिक हो जाता तो 2 पॉइंट तो दे गया था, लेकिन वो पिक नहीं हुआ। ये उसकी स्पीड इस वक्त इतनी तेज़ है कि यू विल नेवर रश, बिकॉज मिड आपका सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, उससे पहले नहीं। 66 अगर रिस्क लेना ही था तो उसने मिड बैंड दिया था, तो मिड बैंड से आता है। उससे पहले 50% है जी। आप देखा रेड हुआ, सेल किया तो 50% है कि वो चलती गई। जी मैंने ये मिस्टेक करी है कल। वो नहीं करनी जी, जब तक आपको, जी या आप ग्रीन बॉक्स में बैठ जाए ना, जब भी ग्रीन बॉक्स आता है 30-20 के, उसके बॉटम पे जाके 1 पॉइंट ले सकती हैं, या रेड बॉक्स आता है तो 1 पॉइंट। देयर इज नो अदर मेथड एट द मोमेंट। अभी जो कंडीशन चल रही है, रेड आता है, थोड़ा सा ग्रीन आ जाता है, मिड बैंड से बाद दफा वो ले जाती है नीचे। अभी तक एक फेल हुआ है, सिर्फ एक फेल हुआ है, इस सारी में एक फेल हुआ है। 9 चले हैं। अगर मैं 9:30 के बाद काउंट करूं तो 9 सही गए हैं, एक फेल हुआ है। तो कंडीशन बेशक फास्ट हो, तेज़ हो, बस आपने ऑर्डर लगाना है। पहली दफ़ा में रेड हुआ 30-20, एक दफ़ा लगा दिया, ग्रीन हुआ एक दफ़ा लगा दिया। तो और 2 ऐसे थे, अगर ट्रेल होते तो आपका पूरा दिन का निकल जाता। 2 ऐसे, अगर आपने उसका वेट करना है, R2 पे जाके बैठ जाएं, R2 पे, फिर ये मिड बैंड वगैरह छोड़ दें, फिब बॉक्स एरिया ट्रेड ले लें। अब मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ एक नंबर का, कि जब तक ये 6645 पे नहीं जाएगी ना, तो हमारा अगर एरिया खोल लें तो हमारा R2 का एरिया क्या कंप्यूटर ने प्रोडिक्ट किया, 44 से 50 के दरमियान ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। सो उस अभी तो ये प्राइस उसके अंदर ही हवर कर रही है। तो ये स्कैल्पिंग मेथड ठीक है, लेकिन आपको लेना तो मिड से ही है ना, उसके और कोई चेंज नहीं होता इसमें। मार्केट तेज हो, फास्ट हो, स्लो हो, ट्रम्प ट्वीट करे ना करे,
सिर्फ अब इशू ये आ रहा है, इसको कंसोलिडेशन है, 10 अप है 10 नीचे, फिर 10 ऊपर जाती है, तो वो ट्रेंड ग्रीन रेड को 6 दफा हो चुका है, अनोइंग हो जाता है। अब मुझे नैस्डैक चाहिए 240 के ऊपर, नाइट सेशन तोड़ेगी तो देन आई विल लुक एट समथिंग। अब मेरा लाइव अकाउंट है, मैंने जाके वहां पर सेल का ऑर्डर लगा दिया है, ये देखें ऑर्डर लगा हुआ है 6645 पे, 1 माइक्रो के साथ, जरूरत पड़ी तो अभी ग्रीन नहीं हुआ, ग्रीन 30-20 नहीं हुआ। नहीं वो R1 तो कोई 10 दफा टच हुआ है आज, अभी R1 को तोड़ नहीं पा रहे। एक ट्वीट आएगी तो सब कुछ तोड़ दाड़ जाएगी, सब कुछ कल की तरह। वन नाइट के एरिया, टू फाइव अभी ये मिड बैंड काम करेगा ना सर? चेक, कोई करेगा नहीं करे मुझे नहीं नहीं गारंटी। वो इस अब पहला पुल बैक आएगा, अगर वो आया तो ये पहला होगा, ये आप मुझसे पूछ सकती हैं कि पहला कि ये पहला मिड बैंड है कि नहीं, ये मैं बता सकता हूँ। मुझे नैस्डैक चाहिए ऊपर 250-40 के बाद। सर नीचे बाय का लगा सकते हैं? या फिर मिड पे बनेगा ना, एग्जैक्टली तो मिड पे, हाँ जी लगाएं, और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगा दें, तो 2 चीज़ें होंगी यहाँ से, तो वही होंगी। मैं आई ऑलवेज हैव टू कीप माय पोजीशन क्लियर। सर कल कीता सी ना तुसी, स्टॉप लॉस ला के उन्होंने जिदा प्रॉफिट जा रहा उत्ते तो अपना स्टॉप लॉस चुक चुक के पीछे पीछे आना है ना। ए देखो लेट्स से कि इधर मैं लाना है एटीएम दे नाल 12-20, चलो ला दिया जी, किधर है 20-60, ये मेरा ऑर्डर लग गया जी, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर लगा, खुद ही एटीएम खुलेगी। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है ना, let's see what my possibilities happen. This is the first time trend went into green, so let's see what हमारी किस्मत। ये 10वां मिड बैंड है, पिक हो गया है, अब 1 पॉइंट मिल गया जी मुझे, ऑलमोस्ट $25-50 नजर आए थे। नो प्रॉब्लम, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी मेरा स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है 5 पॉइंट पे, उसको मैंने छेड़ा $12.37, एक पाल मुसाया था, अभी तक जा नहीं रहा, तो पहली पॉसिबिलिटी कि वापस ऊपर जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, तो इन दिस केस अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, एंड वेरी क्लोज टू अ स्टॉप लॉस, क्योंकि ग्रीन बॉक्स में गई, उसने इस ट्रेड में सिर्फ $37 दिखाए थे। ठीक है, आपको पॉइंट दे दिया, ठीक है, डन हो गया, इस केस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई चेंज नहीं आती। अब 30-20 फिर मजेंटा हो गया तो मैं सेलिंग में आ जाऊंगा। क्योंकि इतना ज्यादा वो बार बार है, तो ये दूसरा मिड बैंड फेल हुआ है हमारा। अगर 10 ट्रेड हुए हैं तो 8 चले और 2 फेल हुए हैं,
तो सेल तो अगर करना है तो मिड से ही करना है और तो कुछ. Let's see if this one missed by a tick kind of. Let's see if breakout gives me anything. Sell stop.